project or two technical course session today. It will be less technical, but I would like you all to have asked all the questions that you still have. Any doubts, any concerns that you have, anything that is uh, not clear to you, make sure you ask those questions in this session. In next session, we will start the concepts. So that will be also a session where we can ask the doubts. But today's the question. Today's it's more about you guys asking any questions about the course, about the schedule, about the topics that are being covered, about duration, about the projects that we'll be doing, about the assignments. So there's a lot of things that we'll be covering today. So make sure you have your pen and notebook ready so that you can take notes. All right. Okay. So let's get started. So for anyone who has joined for the first time, or maybe the people who were not able to join last time, I'll just give you a quick few minutes overview of what happened in the last session. In last session, we discussed about why do we really need to do this course? Why do we need to learn Python? Because Python is one of the most important language these days. We saw how Python is important in different sectors, different industries. We also talked about the high earning potential if you know Python, and we continued our discussion and also understood why do we need to do data science. Why is data science so important in these days? Why has it become such a important field to be in right now, especially if there's a company who if there's a company, they would usually have at least a few data scientists working for them, even if they're new, even if they're not in the data field, even if they're not a tech team, even if they're not a tech company, they would still have a data science team. All right. So it's really important that every company is working towards having a data science team or data science capability, and so that they're not left behind. We also talked about some of the roles after doing the course that you can apply to. So we talked about data scientists, data analysts, data engineers, architects, machine learning engineers, and also software engineer to some extent. Okay. We also talked about how high visibility a data science team is in a given uh, any given company, especially because it has access to the data, and it is the first team who is usually referred to when there's any data question. So be it about how the data is getting populated, whether we have enough data or not, whether we are having data which is not good, do we want to clean more data, things like that. So anything related to data or anything related to the business uh, decisions which are closer to the data will be always done through the data team, and data team usually has these different roles that you see in front of you. We talked about why school open. So school open has placed more than 5,000 people, students since 2011. Some of the students have the salaries as high as 18 lakhs per annum. In fact, this is an outdated number. I think I need to update this. But yeah, it's a rough estimate. About myself, I have an 12 plus years of experience, of which I have 7 plus years of experience only in data science, purely in data science. I worked as data scientist, machine learning engineer, and also algorithms engineer. Uh, we talked about the course being structured and goal oriented. The goals being for you to prepare so that you are at the same level as a 2 to 3 years old experienced person, right? And how the fear of programming we still see in many students, and what are the techniques that we'll be using so that the fear of programming goes away. And I also try to stress a lot on how important coding is right now, especially if you're a fresh grad, or if even if you're having a gap of few years. Programming is a skill which also comes under hard skill. Hard skill meaning not that it's difficult to learn or something. Hard skill meaning something which requires a lot of hard work, uh, or maybe something which requires a lot of time consuming
uh, techniques to learn. Okay, so those are called as hard skills. uh, Next, just a high level on what the course is going to cover. We are going to have three sections: Python, data science, miscellaneous. We are going to talk exactly of all these things that you see here, exactly what topics we are going to cover in detail. I'm going to explain everything. So if you have any questions, make sure you ask those questions when we discuss that part. Who should be doing the course? uh, Anyone who is seeking a high paying job, students like you, students like the people who are already midway in their career and want to upgrade their skills, anyone who wants to develop software, communication skills, especially the data stories telling skills, should be doing the course. And anyone who wants to upgrade their career to be in the field of data science, this course is for them. These were some of the goals that we discussed. The goals are common for the students as well as myself, and I'll be trying to adhere to these goals as strictly as possible. And I expect the same thing from the students too. Okay, ठीक है. So this is what we discussed in the last session. Today we'll start the second session. We usually don't have overviews of the previous sessions, like the one that we did. If there's a topic which was difficult, even during the sessions, if I think that there's a difficult topic that I covered in the previous session, I'll go back and do a review of that particular topic again. Just a short review, maybe 8 to 9 minutes, not too long, just to give you a refresh of what exactly was covered, so that everyone is up to the speed. All right. So the course plan. The course is going to be approximately 5.5 months long. So if you have any commitments in next 5.5 months, make sure you move your calendar or plan accordingly, so that you have 5.5 months dedicated time to work on this course. After that, you'll be applying for the jobs, you'll be applying for the interviews. You should be interview ready at the end of 5.5 months. And that is what the goal is. I'll be covering all the important aspects, especially from the data science interviews point of view. What questions are usually asked, those topics will be covered. What projects are usually asked, even those projects will be covered. The sessions are going to be Sunday, Tuesday and Thursdays. और यहाँ पर टाइम लिखा है 8 बजे से 9:30 बजे तक सुबह के. This will change. When I say this will change, it will just change to maybe 7:30, but it won't uh, be before that. 7:30 से पहले नहीं होंगे कोई sessions. 7:30 to 8. Usually, the reason that I try to pull it back to 7:30 is because 9:30 के बाद में बहुत लोगों के कमिटमेंट्स होते हैं, उनके ऑफिसेस होते हैं या फिर उनको कहीं पहुंचना होता है स्कूल में. तो इट्स यूजुअली अ बेटर आइडिया टू फिनिश ऑफ द सेशंस बिफोर यू हैव योर डेज जॉब. ऑलराइट. तो इसी प्लानिंग की वजह से हम लोग कभी कभी थोड़ा सा जल्दी ले लेंगे सेशंस, ताकि आपको दिन में टाइम रहे. ओके, मेक सेंस? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ग्रेट. The projects that we are going to do, there's going to be one company level major project. And as you can see here, what is the start date and what is the end date? The start date is 15th of October and the end date is 26th of October. So you'll have 1.5 months approximately to complete the major project. So you'll be divided into group of 3 or 4 people, not more than that. You'll be given a major project, uh, and I'll be trying to push you to complete that major project. If you are stuck somewhere, I myself will get my hands dirty and do the project, so that you can get to a certain point जिसके बाद में आपको प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा. इवन लास्ट कोहर्ट वही किया गया था. कुछ लोगों को प्रोजेक्ट मुश्किल गया, तो आई डिड I would say maybe 70 or 80% of the project, and then they were at a good position जहां से उनको प्रोजेक्ट समझ में आए या फिर वो लोग खुद से कर सके. ठीक है. कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद से किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दो स्टूडेंट्स, बिकॉज दे वर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन regular throughout the course.
और उन्होंने सम डेड एनएलपी प्रोजेक्ट्स, कुछ लोगों ने फ्रॉड डिटेक्शन का प्रोजेक्ट किया। फ्रॉड डिटेक्शन एज यू नो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स या फिर ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स जो होते हैं आजकल, उसका डेटा था। एंड दे वर एबल टू प्रेडिक्ट फ्रॉड के ट्रांजैक्शंस कौन से बेसिकली। एंड दिस नॉट अ स्मॉल टास्क टू डू, especially when you have thousands of transactions happening every second. All right, so those kind of projects are something which will be in your company level major project, right? So you can think of fraud detection, NLP projects for topic modeling, or you could think of recommendation systems. That's what one of the team has done in the last cohort. And there's also customer segmentation, which comes under unsupervised learning. So it's going to be an interesting project, especially the company level project. This project will go on your CV, और इसका आप प्रेजेंटेशन भी दोगे। आप जब इंटरव्यूज में बात करोगे तब you will be spending most of the times explaining this project only to the interviewer, because this is the one of the main project that we'll be doing if you have not done any major project for data science before. ठीक है, एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा विच कुड बी लाइक अ वार्म अप फॉर योर मेजर प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप छोटे से डेटा सेट के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स आप यूज करके देखोगे, और यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. दिस मिनी प्रोजेक्ट इज वार्म अप फॉर योर मेजर प्रोजेक्ट. मिनी प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होंगे, everyone has to do one mini project at least, so that ग्रुप के साथ साथ आपका खुद का एक मिनी प्रोजेक्ट भी रहेगा. एक डेटा विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट रहेगा जो आप आइडियली टैबल्यू में करोगे, या फिर अगर आपको पाइथन अच्छे से आ जाता है उस स्टेप तक तब आप पाइथन में करोगे. ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जॉब्स. ये प्रोजेक्ट का आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे विच कुड बी जस्ट नो ऑडियो, जस्ट अ वीडियो वेयर यू विल बी शोइंग कैपेबिलिटीज ऑफ योर डेटा विजुअलाइजेशन. ठीक है, एंड यूल जस्ट पोस्ट इट सो दैट पीपल जिनके साथ में आप इंटरव्यू करने वाले हो वो लोग वो देख लेंगे. इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी डेटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट करना होगा आपको, जिसमें आप टैबल्यू यूज करोगे या फिर पाइथन यूज करोगे, डिपेंडिंग ऑन how good you become at Python at that particular point of time, which is 1st of October 2023. टोटल 19 असाइनमेंट्स रहेंगे. एवरी वीक एक एक असाइनमेंट दी जाएगी और आपके पास एक वीक रहेगा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए. ओके, Okay, sir. yeah, so this is how the course plan is. You can take a screenshot of this. All right, now I'm going to click on this link which will take me to a Excel sheet here. So like I said, आपके सेशंस पहले से planned है पूरे. Right, so this is today's session, plan and schedule. Next session we are going to start with data science. uh, these are the Sundays जो यहाँ पर highlighted days है. जो dates लिखे हुए हैं, these are the Sundays. Every Sunday you'll have a Python session. Okay, और like I said, mini project यहाँ पर शुरू होगा आपका 27th अगस्त को, और मिनी प्रोजेक्ट खत्म होगा आपका 17th सितंबर को. ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? प्रमोद, यू हैव क्वेश्चन? यस प्रमोद. सर, डेटा साइंस में कितना मैथ्स और स्टैट्स की जरूरत होती है? 10th स्टैंडर्ड तक जितना कवर किया है आपको उतना, उससे भी कम एक्चुअली, बट 10th स्टैंडर्ड तक आप समझ सकते हो. ओके. क्या? ओके, ओके. यस. और ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, दिस इज द स्केड्यूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. यहाँ पर आपका मिनी प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपका डेटा विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट रहेगा, और यहाँ पर आपका मेजर प्रोजेक्ट रहेगा. मेन प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू होगा. At this point of time, you will be very good at Python. That is what my expectation is. इसके पहले आपका Python पूरा कवर हो जाना चाहिए, और you should have a good hands-on experience till this point of time. Okay. So like I said, everything is planned, or we'll try to not skip any sessions. In fact, I never skip a session. Only if there's something really urgent that needs to be addressed, that would be an exception. But you can assume that this is what we're going to follow.
and we'll be on a tight deadline like this. 26 नवंबर को हमारा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, and you should be ready for the interviews by this time. All right. In addition to what is covered here, one thing that I didn't mention here is uh, so we'll be given an interview questions guide where you'll have questions by topic which are usually asked in interviews. आप अगर वो questions ठीक से plan करके study करके notes निकाल के रखते हो, then that should be helping you during your interviews. तो ये सेशंस आपके टोटल 64 सेशंस होंगे, और these are the weeks that we are going to have. Every session is going to be 1.5 or more hours long. Sometimes, like I said, there were some sessions on Sundays which were 3.5 hours long, especially जब मैं project hands on लेता हूँ, that is when I demo how to do a project, right? So some of those sessions are like 3.5 4 hours long too. So be prepared for those long sessions, but those are usually on Sundays. Weekdays may I try to avoid that. Okay, weekdays में you can assume कि आपका session 1.5 से 1:45 hours का रहेगा. All right. In last session, many students were asking me about data science topics. So these are the topics that we'll be covering in data science. Not sure how many people are able to see this, but let me just do a refresh. Full screen here. Okay. So depending on how you're joining it, if you're joining it for computer, you should be able to see it fairly easily. Mobile से join कर रहे हो तो थोड़ा सा zoom in करता हूँ मैं आपके लिए. So these are the main topics. I can share this later with you all. We'll start with the introduction of data science. उसके बाद में हम लोग will talk about how the data is captured, what are the different data cleaning techniques, how the data info transformation is done, what is feature engineering. Uh, After that, we'll discuss something about EDA. EDA means exploratory data analysis कैसे करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, फिर उसके बाद में डेटा को विजुलाइज करने के बाद में उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, इनसाइट्स कैसे निकालते हैं, बिजनेस डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. After that, you have data visualization, where you'll be learning about Python में कैसे करना है, Seaborn, Plotly, we'll use some of the Plotly too. Uh, Data visualization के principles क्या क्या होते हैं, what are the good charts, what are the bad charts, क्या क्या avoid करना चाहिए आपको data visualization करते वक्त, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी. उसके बाद में statistical analysis and hypothesis testing. This is pretty commonly used if you are applying for a purely data scientist job, जहाँ पे hypothesis testing करनी होती है, जिसमें आपको अलग अलग टेस्ट करने होते हैं. So to those are statistical tests. Distributions के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, different type of distributions, different sampling techniques. For most of you, this might sound like uh, a completely different language depending on your background, but these are the important topics for data science. Okay, although आपको लगेगा कि ये सारे questions, ये सारे words अभी कुछ sense नहीं कर रहे आपको, but don't worry. uh, you'll be going through each of them, or it will get very easy for you. In fact, many of the concepts that you see here will be repeated so many times that it will feel like a second nature. कि आप एक बार पढ़ रहे हो और then you suddenly try to make a connection with different topic, and it will happen with you also. So आप एक topic पढ़ रहे हो and suddenly you will be like, oh, ये तो हमने वहां पर भी पढ़ा था, and there must be some link between them, and I'll tell you how the link is there. Okay. We'll talk about NLP. Sorry, yeah, machine learning algorithms. मशीन लर्निंग में कौन से algorithms होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. These are the main algorithms which are used in machine learning. Supervised learning, unsupervised learning, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, वैलिडेट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन में कैसे डालते हैं मॉडल को. मॉडल का मतलब होता है जब भी आप लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हो, लाइक, so that's a recommendation system. आपने कुछ टेक्स्ट वो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डाला, उसके ऊपर से कुछ रिकमेंडेड लिंक्स आए आपको. हाउ इज दैट लिंक, हाउ आर दोज लिंक जनरेटेड. Okay, so those links are generated using a recommender system model. What is the recommendation system model, वो सब पढ़ेंगे हम लोग. All right.
Uh, Deep learning, we'll have an introduction to deep learning and neural networks. We'll also do uh, code for neural networks using Keras. Keras is a library which we have in Python, and we can use that to build neural networks. Okay. Natural language processing, which is an important topic in these days because you see a new model coming out every day, which are some version of language generation or text generation. You must have heard of ChatGPT, you must have heard of Bard. So all of these are natural language processing models or NLP models, which are used for different purposes. Okay, so we'll have introduction to that, and we'll also learn how to do an NLP project. Okay, time series analysis is something. Think of how would you predict demand of something over next years, over the next in the future. How would you predict maybe stock prices if you're into that? How would you predict? Basically, time series is nothing but a data which changes by time, right? कल कुछ और वैल्यू रहेगी, परसों कुछ और वैल्यू रहेगी, उसके बाद में कुछ और वैल्यू रहेगी. So this kind of data is called the time series data. So you'll have a date and you'll have a data value. So date के साथ में change होते जाते हैं. So how do you predict those things? That comes under time series. उसके बाद में feature engineering again. This is also common part in data science. Pretty important topic again. फीचर इंजीनियरिंग में आप अलग अलग टेक्निक्स यूज करोगे. जैसे आप फीचर्स मतलब आपका डेटा जो भी है उसको क्लीन कैसे करते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. ठीक है. अगेन I'll repeat, don't get scared of these topics although they may sound completely foreign. ये टॉपिक्स इजी है, सिर्फ इनके नाम थोड़े से अलग है बिकॉज वी आर नेवर टॉट दीज टॉपिक्स यूजुअली इन आवर स्कूल्स. ओके. तो जब हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब वो बहुत इजी लगेंगे, बट अभी आपको थोड़ा सा नाम से डर लगने लगेगा. दैट्स व्हाई आई वाज trying to keep it as much abstract as possible so that you don't get scared of these names and then suddenly think whether you'll be able to do it or not. Okay. Like I said, हमारे previous sessions में लोग CA थे, people were from uh, different backgrounds. They were all able to do it. They were all able to understand everything. Majority of the people, okay. Even if their background was non-IT, they were able to understand all the topics that were covered. So टॉपिक्स मुश्किल नहीं होंगे, बस उनके नाम थोड़े से मुश्किल लगेंगे आपको अभी, क्योंकि ये आपने कभी सुने नहीं है इसीलिए. ऑलराइट. मॉडल डिप्लॉयमेंट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हो आपके सीवी पे तो ऑब्वियसली यू विल बी आस्क्ड अबाउट प्रोडक्शन में कौन से मॉडल आपने डिप्लॉय किया और क्या क्या होते हैं, तो विल स्टडी अबाउट दैट टू. फाइनली दिस इज अबाउट डेटा इश्यूज, स्पेशली प्राइवेसी, सिक्योरिटी, फेयरनेस, बायस के बारे में बात की जाएगी, एक्सप्लेन कैसे करते हैं मॉडल्स को उनके बारे में. ऑलराइट. So these are the topics that we are going to cover in data science. I'll just stop here to see if anyone has any questions. So I just wanted to ask, is it possible if you could share this sheet with us, probably just copy paste it on a Google sheet and share the link with us? So like you all know, these sessions are recorded and you will be shared the link to. So you can go back to the recording and you can see this session, see these topics, right? All right, all right. Yeah, yeah. Because I can do that, but there's no common place where I can share this so that everyone will be have access to it. So it's better. This is going to be in a recording, and you all can just revisit the recording and check out the topics here. Make sense? Yes, sir. Yeah, because some people are still not there on Telegram, and then usually when I share things, I like people to be on Discord, which is a shared location for all kind of documents that I usually share. Okay. So this will be shared in Discord later when you join, but for now, you may have to refer the recording. All right. Yes, sir. Yeah. Just go slowly so that maybe when you see the recording, you don't feel lost.
All right. Again, if you are going to compare this, make sure you just don't compare the topics. Also compare the overall package. Okay. So it's not just the things that we are going to cover. It's about the group that we create where you'll have a learning opportunity with other students too, and that's a pretty big advantage rather than studying in silo. Okay. So these are the data science topics. Next is Python topics that we are going to cover. Just zoom in a bit on this. So Python is the language that we'll be learning in this particular course, and it is a language that we are going to use for data science projects too. The process of learning a language, much like other language, is similar. You'll be taught what's the syntax, then why is that particular language important, also how to write code in that particular language. In this case it's Python. Okay. It has some subtopics listed here. What's the syntax, what's the basic input output functions. If you're from IT background, you'll quickly understand the words that are written here, right? Function modules should be pretty familiar terms to you. After that, we talk about the data structures. Data structure is nothing but a variable or an object in which you'll be storing your data. There are various types of data structures in Python. So we'll be discussing those. Object oriented programming. It's a big topic, but we'll be only touching on the things which are important for data science. Okay. So we'll be not going very deep into this. We'll be having an introduction to classes, objects. We'll also learn about inheritance, polymorphism, encapsulation, some class methods, how to write instance methods, and so on. Okay. But this is more than enough. Even for a software engineer, these topics are more than enough. If you do it properly, then these topics are more than enough for any software engineering interview too, if you're applying for an object oriented programming job. Next, here you'll see error handling. uh, what are the topics covered in the error handling? You see here, give me a second. Just need to add a, all right, I'll do it later. Then we'll talk about functional programming, lambda functions, pretty common stuff in Python. Modules and packages, how to build your own modules, how to build your own packages. File handling, input output operations. These are the string operations that we're going to do. NumPy, this is a library which is used by data scientists and the data science community a lot. Uh, we'll be having introduction to that. We'll also learn how to do various things in NumPy. Same way, Pandas is another library. Finally, we'll learn about Matplotlib and data visualization. Database access is pretty common in most of the companies because data is not stored in files or data is not stored in uh, uh, local devices. Is usually stored in a shared location, which could be a database or some kind of a structured format where the data is stored. You'll be connecting to that and fetching the data through Python. So you'll be connecting to the database, running the queries, and getting the data back. Okay. So these are the topics that will be covered in Python. Again, I'll pause here for some time to see if you have any questions. ठीक है, I think no questions. uh, चलो हम लोग अभी next देखते हैं. These are some of the miscellaneous topics. Miscellaneous मतलब जो topics आपको in addition to Python and data science जो आपको इंटरव्यूज में यूजुअली आस्क पूछे जाते हैं उनके बारे में. वो कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिट. गिट इज इन फैक्ट इज one of the top required skill to have for any kind of a tech job. Okay, be it data science, be it software engineer. In fact, अगर आप टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई करते तो Git is useful. So Git is a important skill set to have. Okay, so
गिट में ये सारी चीजें कवर होने वाली है आपकी। गिट को यूज कैसे करते हैं, गिट के कमांड्स कौन से हम लोग गिटहब यूज करेंगे, और विल आल्सो यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज गिटहब डेस्कटॉप टू लर्न अबाउट गिट, एंड हाउ टू बेसिकली यूज गिट। हम लोग गिट ही यूज करेंगे हमारे मेजर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो गिट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग गिट यूज भी करेंगे। टैब्ल्यू इज आवर डेटा विजुअलाइजेशन टूल। हम लोग टैब्ल्यू यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रेजेंट ये बना सके, पब्लिक डैशबोर्ड्स बना सके या फिर रिपोर्ट्स बना सके टैब्ल्यू में, जो आप शेयर करोगे मेरे साथ में और आपके फेलो स्टूडेंट्स के साथ में भी, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड इन टैब्ल्यू। हम लोग डिसेंटली कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाएंगे टैब्ल्यू में, जो आप अपने रिज्यूमे में भी डालोगे। सो यू विल बी इंटरमीडिएट स्किल्ड इन टैब्ल्यू आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, राइट? No need to buy any of these softwares again. The softwares are chosen such that you don't have to spend money on buying the softwares or working on something which requires another thing to pay for. Okay. SQL, important language that you have to learn again as a data scientist, but you don't need to go really deep into it. We'll be covering different databases, introduction to MySQL, Postgres, Oracle, Redshift also, and जो सिंपल सिंपल चीजें होती हैं वही हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल में, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ सीक्वल एक्सपर्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट। यू आर एक्सपेक्टेड to have some decent knowledge about SQL. You are expected to be dangerous enough to do a project in SQL. Okay, but you will not be expected to be a superstar in SQL. Okay, and will be getting you to that particular level. So as you can see here, the topics are such that they will help you excel in the interviews. They'll help you get the job. Again, the main goal is for you to get the job, uh, or move on to a next level in your career. Okay. Any questions? I'll again pause here. I'll scroll up and down so that you can have this on the video later. Apart from this, if I feel there's a topic which needs to be covered, I will definitely add that depending on any feedback I get. थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ मैं इसमें, ताकि आपको ये भी रहे आपकी वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्रोजेक्ट्स के डेट्स याद रखो आप, बिकॉज दिस इज व्हेन आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू बी फ्री एट द सेम टाइम। ऐसे नहीं होना चाहिए आप मेन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो और आपके टीम में आप फ्री नहीं हो और आपके फेलो ग्रुप मेंबर्स को सारा प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। सो विल हैव चेक पॉइंट्स एवरी वीक जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग सही ट्रैक पे हो। you'll see some checkpoints here. If we have maybe 7 8 groups, then we'll have checkpoint for maybe 3 4 groups each time, just to make sure कि आप लोग सही ट्रैक पे हो कि नहीं मेन प्रोजेक्ट के लिए। And this is when you submit the main project, and this main project is going to be on your GitHub. It's going to be on your resume. You will also have this data visualization project which will go on the Tableau public server, which you can share again with your interviewers. Any doubts, any questions, any concerns? Any topics that you think should be covered but not be but you don't see the name here? I know some of you have mentioned Excel earlier. uh, I'll be covering some parts of Excel, maybe until the VLOOKUP, but don't expect कि आपको Excel पूरा पढ़ना होगा या फिर सीखना पड़ेगा, because
it might be time consuming sometimes, okay. But इनिशियली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डेटा साइंस के यूजुअली प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको वो एक्सेल में उसका रिपोर्ट्स वगैरह जनरेशन आपको दिखाई देगा. इवन आई क्रिएट मेनी एक्सेल रिपोर्ट्स just to for example, agar there's a topic in data science that I think would be better if we explain it using an excel sheet, I definitely do that. In fact, I've done that for the earlier cohort too, जहाँ पर हम लोग क्रॉस वैलिडेशन को एक्सप्लेन करते वक्त एक्सेल यूज करते थे. अगर हमें कुछ समरी वगैरह निकालना है डेटा का, या फिर नॉर्मल विजुअलाइजेशंस करने होते हैं, उसके लिए हम एक्सेल यूज करते हैं. ठीक है, तो आई टीच यू दैट पार्ट. जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा. बट ऐसे नहीं कि दैट विल गो क्रेजी ऑन लर्निंग एक्सेल एंड देन द important topics are left out. We'll never do that. All right, coming back to the slides now. This interview guide will be provided to you when you enroll to the course. I have a list of questions. Obviously, these are just list of questions. आपको questions के आंसर खुद लिखने पड़ेंगे. आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. That will also make or help me understand if you are really understanding the concepts or not. You'll have the interview guide answers written yourself, and that will also keep you track on preparing for the interviews. Okay? By the end of the course, like I said, आपके जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर हो जाने चाहिए. All right, textbook. I think this again. Why is this slide not updated? Give me a second. Okay. तो हम लोग कोई भी सेशन या फिर कोई भी कोर्स जब करते हैं, यूजुअली the biggest problem is, or the biggest challenge is, whenever the tutor or whenever the teacher teaches something, we don't have full overview or the full view of from where is he teaching, or from what reference material are these slides or are these explanations created, so that student can also give that full overview. ठीक है, इसीलिए हम लोग टेक्स्ट बुक यूज करते हैं ताकि आप लोग लॉस्ट ना फील करें. आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक मैंने सिखा दिया और वो टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको डीप में पढ़ना है, आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उस टॉपिक की, आप इंटरनेट पे जाओगे, किसी भी अनरिलायबल सोर्स से पढ़ोगे, और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा. राइट, सो देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आउट देयर जहाँ पे डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी होती है सेम चीज़ों की, डिफरेंट वर्डिंग यूज की जाती है. स्पेशली अगर आप किसी स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे जाते हो तब अलग तरह से कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाती है. अब जब आप मशीन लर्निंग की वेबसाइट पे जाते हो तो सेम कॉन्सेप्ट इन अदर वर्ड्स किया जाता है एक्सप्लेनेशन. सो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू बी लॉस्ट इन दैट enormous corpus of लिंक्स और इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसीलिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं इतने ही टेक्स्ट बुक के लिए. चीजें सारे इसी टेक्स्ट बुक से ली जाएगी. इसी टेक्स्ट बुक में आपको रीडिंग बताया जाएगा कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है. ये चैप्टर्स थोड़े से पढ़ने में मुश्किल जाएंगे शुरुआत में, बट आप जितनी बार पढ़ते जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा. अगेन, ये टेक्स्ट बुक्स आर द टेक्स्ट बुक्स दैट आर suggested to be by my professors. I myself have done masters in data science. ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए और मैं सीख के आया हूँ. I have completed masters in data science. ठीक है, तो these were the textbooks that I referred when I was doing my masters, and I will be teaching from these textbooks only. And I would suggest कि आप लोग यही टेक्स्ट बुक यूज करोगे जब आप ये पढ़ोगे कोर्स. ठीक है, पाइथन के लिए दिस इज प्रिटी कॉमन टेक्स्ट बुक, जो थिंक पाइथन नाम का टेक्स्ट बुक है. डेटा साइंस के लिए डेटा साइंस फॉर बिजनेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे की स्टडीज दिए गई है और मॉडल्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग. अगेन, स्टैटिस्टिकल लर्निंग बोला है, इसका मतलब ये नहीं इसमें बहुत ज्यादा स्टैट्स हैं.
इसका मतलब यही है कि इसके अंदर की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जो स्टैट्स की चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी या फिर जो भी मॉडलिंग की चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो यहाँ से कवर की जाएगी। मिसलेनियस के लिए जहां जहां भी हम लोग उसको कवर करेंगे वहां वहां वो चीज शेयर की जाएगी, जैसे कि गेट कहाँ से पढ़ना है, टैब्ल्यू कहाँ से पढ़ना है, सीक्वल कहाँ से पढ़ना है, तो वो सब मैं जब वो सेशन रहेगा तब वो शेयर करूंगा। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पाइथन और डेटा साइंस के लिए, ये टेक्स्ट बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं। इनके पीडीएफ फाइल्स में शेयर कर दूंगा दोनों के, जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तब एक क्लोज्ड ग्रुप रहेगा जहां पर ये आपके पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अगेन यू डोंट हैव टू बाई एनी ऑफ दिस बुक्स, आई शेयर द पीडीएफ्स, नॉट टू वरी, बट यू आर फ्री टू बाय द बुक्स। अगेन दीज आर रियली गुड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको लगता है कि बुक को खरीदनी चाहिए फिजिकल कॉपी, देन यू कैन गो ahead एंड बाय द बुक टू। ओके, अगर आप बुक नहीं बाय करते तो आई कैन जस्ट शेयर द पीडीएफ। ऑलराइट, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? All right, so before I move on to the next topic, which is important, I would like you all to just s- take a step back, breathe, and think about any questions that are coming to your mind. Okay, so just pause here for a couple of seconds. I need to drink some water too. Hello. Yes, Harish. Sir, I have a query. Any AI Yeah. tools, are there any AI tools which are in syllabus included, So, what do you mean by AI tools, Harish? Let me ask you a uh, counter question there. which are used for data science in future? Are there any, at least any introductory part will be covered? That's what I'm asking you. I mean, what are the AI tools that you have heard of? And I would like to understand that. I would like to understand from where the question is coming, and uh, not to uh, say that there are no AI tools or anything like that. I'm just trying to understand what Okay. exactly are you looking No, for? actually, my friend who referred me, Mhm. he asked me to, make a query that are there any AI tools related to data science will be taught or not? Just ask for, you know, So, so AI is done through coding, Python. Okay, there are a couple of other libraries too. For example, NLP library, that we teach, NLP project that we teach. It has a library called as NLTK, which is an AI library again. Okay, after that, okay, scikit-learn is also used in AI. Then neural networks, we have an introduction to neural networks, deep learning, which is also part of AI. Then text generation, that's also part of AI in NLP that we'll be learning. Obviously, we'll not go very deep into encoder, decoder networks, recurrent neural networks, all of that, because that would be very specific to AI. That's a different AI course, right? Altogether. But introduction to AI, definitely we are going to have that. Okay. I'm not calling okay, the AI here because mm, AI. So let me just show you a diagram. Okay. AI, ML, data science. Okay. This is not the right one. So AI, if you understand what a Venn diagram is, अगर ये AI yes, येलो कलर का बाहर का डायग्राम है, तो इसके अंदर mm, मशीन लर्निंग आता है, इसके अंदर डीप लर्निंग आता है। ओके, सो AI इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। ओके, okay, इसमें बहुत सारी चीज आती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आती है, उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया डीप लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के सारे मॉडल्स आते हैं, मशीन लर्निंग सारा हम कवर कर रहे हैं, डेटा साइंस सारी चीजें आती है। तो डेटा साइंस इज कवरिंग मशीन लर्निंग, covers AI, covers deep learning little bit,
ठीक है, लिटिल बिट यहाँ पे जितना दिख रहा है। एंड Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हैज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। सो ये जो पार्ट है यहाँ पर जो बाहर है, that is not Mhm. part of AI, but that is business, that is data visualization, that is SQL, that is storytelling, dashboarding. All of that is part of data science, but it's not part of AI or anything. Okay, so this is an Okay. infographic. I hope that Okay. uh, helps you. Yes, sir. Yeah, all right. Good question, Harish. All right. Any other questions, guys? किसी को कोई सवाल? Anyone wants to uh, understand anything that we have covered till now? Anyone has doubts? Yes, Sunil. Sir, I am asking for 3 to 4 questions. First of all, Mm-hmm. Mm. My question is first is I am I am searching for Naukri.com, LinkedIn.com और market how में मतलब किस किस पे ज़्यादा उनका फोकस है या किस पे मतलब ये है तो मैंने ज़्यादातर देखा था तो एसक्यूएल पावर बीआई ये टॉपिक मतलब नहीं है Mm-hmm. मस्ट मस्ट है मोस्ट ऑफ द जॉब तो करेक्ट है, तो हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, हम लोग पावर बीआई नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम लोग टैबल्यू पढ़ रहे हैं, विच इज सेम। ओके एसक्यूएल पार्ट इज आपने बोला मतलब डीप डीप नहीं मतलब इंट्रोडक्शन नहीं पार्ट सिखाएंगे एसक्यूएल विल बी टॉट इनफ टू बी डेंजरस, ठीक है, जिसका मतलब है आपको इंटरव्यूज में जितने क्वेश्चंस आते हैं एसक्यूएल के वो आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन एडवांस एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें होती है। इफ यू हैव वर्कड इन अ कंपनी, आपको एडवांस एक्सेल में ईटीएल जॉब्स भी लिखे जाते हैं, एडवांस एक्सेल में डेटा इंजीनियरिंग का बहुत सारा पार्ट आता है एडवांस एक्सेल में, करेक्ट। तो हम्म इसीलिए मैंने बोला कि एडवांस एक्सेल वो पार्ट नहीं करेंगे हम लोग जिसमें ईटीएल जॉब्स, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजीनियरिंग, और फिर वो पूरा अलग कोर्स हो जाता है, राइट। सो लाइक अगर आप थोड़ी देर पहले आपको अगर वो डायग्राम दिखा होगा, तो डेटा साइंस में बाकी चीजें भी है, जो बाकी चीजें उसमें से थोड़ा 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 है। तो आपको, हाँ, आपको इंटरव्यू में जितना सवाल पूछे जाते हैं उतना मुझे पता है, तो आई कैन प्रिपेयर यू फॉर दैट। बट ओके योर टारगेट शुड बी फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेटा एनालिस्ट दिखेगा, डेटा इंजीनियर दिखेगा, डेटा आर्किटेक्ट दिखेगा, राइट। सो जब आप इसमें नौकरी डॉट कॉम पे स्किल सेट देखते हो, तो वहाँ पे एसक्यूएल दिखेगा, आपको पावर बीआई दिखेगा। पावर बीआई इज नथिंग बट टैबल्यू, सेम थिंग, ठीक है। जो आप टैबल्यू में करते हैं वही पावर बीआई में भी कर सकते हो आप। डेटा ओके विजुअलाइजेशन का कोई तो भी एक टूल आना चाहिए आपको, दैट इज व्हाट दे ओके मीन बाय पावर बीआई, करेक्ट। ओके 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 और जैसे कि हारिस ने पूछा था वो भी मेरा एक क्वेश्चन था एआई रिलेटेड कि मतलब वो आप मतलब वो पढ़ने नहीं वाले क्या मतलब थोड़ा बहुत उसका तो ये लेट मी, ओके, लेट्स टेक अ स्टेप बैक हियर, ठीक है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर वी गोइंग टू कवर एसक्यूएल एंड पावर बीआई, ठीक है। तो हम्म एसक्यूएल पावर बीआई को अगर आप एआई के साथ में कंपेयर करोगे, तो वो दोनों हम्म बहुत अलग स्पेक्ट्रम में। एआई फॉर मी इज समथिंग जहाँ पे आप एडवांस चैटबॉट लिखते हो, जहाँ पे हम्म आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हो, जहाँ पे आप डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करते हो, राइट। सो दैट इज एडवांस्ड एआई फॉर मी, ठीक है। तो ओके ओके पावर बीआई का यूजर, एसक्यूएल का यूजर, इसको एडवांस्ड एआई का कभी भी एक्सपोजर नहीं होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली होगा जहां पर इट विल बी यूजर, आप यूजर बन सकते हो एआई के, अगर आपके पास ये स्किल्स होंगे तो, ठीक है। बट अच्छा हमारे कोर्स में हम लोग, वी आर नॉट मेकिंग यू यूजर्स ऑफ एआई, वी आर मेकिंग यू डेवलपर्स ऑफ एआई। यहाँ ओके पे जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, दीज आर द टॉपिक्स टू मेक यू डेवलपर ऑफ एआई, ओके। दिस ओके विल ओके दिस विल हेल्प यू क्रिएट द मॉडल्स। यहाँ पर आप मॉडल्स बिल्ड कर रहे हो। ये जो ओके मॉडल्स है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन यस ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, दीज आर ऑल एआई मॉडल्स, ओके, दीज आर यस मशीन लर्निंग मॉडल्स, बट यस they come under AI only. Clustering हो गया, unsupervised learning, supervised learning. So this is all AI. तो ओके थोड़ी देर पहले मैं जो डायग्राम दिखाया था आपको, इनफैक्ट लेट यस मी जस्ट कीप द डायग्राम ओपन, ओके। AI, keep this diagram open. तो आपको दिखेगा वहां पे ओवरलैप जो है डेटा साइंस का। तो यहाँ पर
जी ओवरलैप है, यही ओवरलैप का मतलब होता है कि ये सारे टॉपिक्स आपको कवर होने वाले हैं यहाँ पे। कवर होना। ओके ओके। करेक्ट। हाँ सर। तो एआई के टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा कि दिस इज, instead of calling this introduction to data science, I can call this introduction to AI, because ये कवर होता है, एआई का ही पार्ट है नहीं डेटा साइंस भी, ठीक नहीं है। नहीं, वो बराबर है सर, लेकिन थोड़ा बहुत हमको मतलब जब हम इंटरव्यू फेस करेंगे या कुछ करेंगे तो थोड़ा बहुत हमको उसमें से थोड़ा नॉलेज मतलब इसलिए पूछा जाता है कि मतलब उसके रिलेटेड हमें थोड़ा बहुत मतलब आना चाहिए एआई रिलेटेड। डेफिनेटली सुनील, एंड आई थिंक तो व्हेन यू से कि इंटरव्यूज हम लोग फेस करेंगे तो हमें आना चाहिए। हम्म सो आई एम अज्यूमिंग कि you already have faced some of the interviews where you were asked some AI questions. Is it true? हम्म। Okay, so I mean, I'd like to understand कि वो क्या questions थे जो आपको पूछे गए थे एआई के बारे में। क्या हुआ सर? सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हेन यू से कि मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, फॉर एग्जांपल आप आफ्टर कोर्स यू गो टू एन इंटरव्यू एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एआई के क्वेश्चंस आएंगे, तो यस। इन योर माइंड, आपके दिमाग में वो क्या सवाल होंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो सवाल क्या है? मेरे दिमाग में मतलब वो रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पूछेंगे ना इंटरव्यूअर, इंटरव्यू हाँ, लेने तो मैं वाले। वही, हाँ तो हाँ। वो रोल पे डिपेंड करता है, राइट हरीश, सॉरी अच्छा अच्छा। सुनील। वो ओके आप ओके। कौन से, आप अगर आप एआई इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई करोगे तो अब आपको एआई के ओके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप डेटा साइंस के लिए अप्लाई करोगे आपको डेटा साइंटिस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करेक्ट। ओके ओके। ओके। इफ जब भी हम लोग कोई ओपनिंग देखते हैं किसी भी कंपनी में, वो यस। कंपनी के डिस्क्रिप्शन में यू दिल बी लिस्टिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन जब आप इंटरव्यू दोगे तो वो लोग वही सवाल पूछेंगे जो रेलिवेंट है आपकी जॉब के लिए। अगर आपने ओके डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो डेटा ओके साइंटिस्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपने एआई ओके इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है तो एआई के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। ओके ओके I ओके। I can I mean definitely I can teach you all these things, but that will be हाँ यार, like बस just थोड़ा एक इंट्रोडक्शन विट, पार्ट है। हाँ हाँ। विट, तो आपका विट, आप जितना ज्यादा विट है ना उतना ज्यादा विट आपको कवर किया जाएगा जितना यूजफुल होगा, यस। राइट। विट का मतलब है कि जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको कवर कर सकते हैं वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, लेकिन डेप्थ की जब बात आती है, जब इंटरव्यूज में यूजुअली विट नहीं देखते वो लोग, वो डेप्थ ओके देखते हैं, कितना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हो आप टॉपिक्स को, या फिर ओके। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, राइट। सो दैट यस। डेप्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ विट इज ओके, आई मीन आपको you can know a little bit of Python, you can know a little bit of SQL, you can know a little bit of C sharp, you can know a little bit of Java, इन सब का थोड़ा 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 पता होना अच्छी बात है, बट डीप में आपको एक तो भी टॉपिक आना चाहिए, करेक्ट। यस। यस। So that is what this course is about. We'll have some depth width here. ये जो questions है, these are all wide range of topics, right? इनफैक्ट ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ये कोई नहीं पढ़ा था, ओके। हाँ। एनएलपी आपको कहीं भी दिखेगा नहीं इतना डीप में जितना डीप में हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छा। राइट। उसमें सर। फ्यूचर इंजीनियरिंग इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर, या। यस यस। यस एंड अगेन इज दिस मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन में मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं, हम लोग ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं अपने हाथ से, यस। यस। करेक्ट। यस सर। और एक था क्वेश्चन कि हम्म। ये मॉक टेस्ट का मतलब अपना कैसा रहेगा, ये मॉक टेस्ट मतलब जो। तो जब आपके कोर्स खत्म हो जाएंगे तब यू जस्ट टेल मी कि यू आर रेडी फॉर मॉक इंटरव्यूज, आई विल टेक योर मॉक इंटरव्यूज। एंड मॉक इंटरव्यूज जब हम लोग करते हैं तब हम लोग वी कीप इट ओपन टू ऑल, ताकि आपका जब इंटरव्यू चल रहा हो एवरीवन कैन लिसन इन, ताकि वो भी समझ सके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो तो एवरीवन आप। विल एबल टू, ऐसे नहीं कि मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा तो सिर्फ वही आदमी कॉल पे रहेगा, फिर वो स्टूडेंट कॉल पे रहेगा, एवरीवन विल बी प्रेजेंट, दे विल बी ऑन म्यूट। मैं सवाल पूछूंगा और जिनका इंटरव्यू चल रहा है उनका मॉक इंटरव्यू चलते रहेगा, ताकि बाकी सब लोग सुनते रहे कि चलता कैसे इंटरव्यू, राइट। सबको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। वीकली नहीं होएगा ना लास्ट में? हाँ लास्ट में, क्योंकि वीकली आपको आई कैन नॉट टेक मॉक इंटरव्यूज हियर, राइट, क्योंकि यू आर स्टिल लर्निंग। यहाँ पर आप अभी भी आप पढ़ रहे हो, राइट, यू आर स्टिल लर्निंग एट ग्रुप दिस पॉइंट। डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशंस ऑब्वियसली होंगे, मेन प्रोजेक्ट में आपके ग्रुप्स होंगे कि तैयार। अगर आपको मैंने अभी तक डिस्कॉर्ड चैनल दिखाया नहीं है तो मे बी, आई थिंक मैंने दिखाया था पहले।
just share it again with you all. So this is what the group Discord channel looks like. यहाँ पर ask और answer के यहाँ पर group discussions होते रहते हैं, students के questions आते रहते हैं, right? So these are the answers from students. So you'll see some मैं questions पूछते जाता हूँ, students answer देते जाते हैं ऐसे, right? So this is kind of a collaborative place जहाँ पर students अपने questions पूछते हैं या फिर मैं अपने questions पूछता हूँ और चीजें share की जाती है। ये मिनी प्रोजेक्ट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। अनाउंसमेंट अगर कोई होंगे तो फिर वो यहाँ पे होते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज चैनल जहाँ पे सारे रिसोर्सेज एक जगह पे होते हैं और इसका एक्सेस आपको कहीं जाएगा नहीं। यू विल हैव दिस लाइफ टाइम एक्सेस। आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस चैनल्स एनी टाइम। ओके। ओके। और सर अपने हाउ मेनी बैचेस आर कंप्लीटेड बाय स्कूल फॉर डाटा? सो डेटा साइंस के लिए अभी तक जैसे डेटा साइंस के लिए स्कू ओपन के मैंने अभी तक दो लिए हैं। ठीक है। सो दिस विल बी माय सेकंड वन। और इसके पहले आई थिंक आशीष सर विल बी एबल टू आंसर दैट। आई एम नॉट श्योर कि इसके पहले कितने बैचेस हुए थे डेटा साइंस के। इसके पहले भी हुए थे बट आई एम नॉट श्योर कि कितने हुए थे या फिर हु वाज द इंस्ट्रक्टर एट दैट टाइम। ओके ओके ओके। या थैंक यू सर। And I was a data science tutor for different place earlier, and so I mean I myself have conducted quite a few batches for data science, machine learning, and AI also. Okay, या थैंक यू सर। definitely. Other questions? Yes, Sunil. हो Sunil, गए सर। yeah, okay, okay, I see your hand raised. All right. Okay, now just quickly let me just tell you all the expectation from students. So anyone who's going to join the batch, the way you have expectations from the tutor or the teacher also has expectations from you. Okay. So the most important expectation is be prepared for each class. Assume करो कि आपका क्लास होने ही वाला है. There will be no cancellations. Okay. Again, I'm saying there will be no cancellations. Unless and until there's something really important that comes up, हम लोग cancel नहीं करते हैं sessions कभी भी. अगर मैं कभी कभी लिंक सेंड करना भूल जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि सेशन नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मैंने लिंक सेंड नहीं किया। लिंक आपको सेशन के पहले मिल जाएगी। ठीक है। तो देयर विल बी नो कैंसिलेशन व्हाटसोएवर। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको जितने भी असाइनमेंट्स दी जाती है वो सारे आप ऑन टाइम विथ फुल एफर्ट्स विदाउट चीटिंग सबमिट करते हो। ओके। विदाउट गूगलिंग द आंसर डायरेक्टली, थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप वो असाइनमेंट सबमिट करते हो। ठीक है। दीज आर द एक्सपेक्टेशंस एंड आई अज्यूम दैट everyone who is going to be on this course are adults and they understand why these expectations are set. ठीक है। नो चीटिंग, नो कॉपिंग, पुट फोर्थ योर बेस्ट एफर्ट। जब भी कोई सेशन होता है लुक फॉरवर्ड टू द सेशन। ऐसे नहीं कि ज्वाइन कर लिया सुबह सुबह, ज्वाइन कर लिया फिर चाय पीने चले गए फिर घूमने चले गए, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन चल रहा है सेशन, बैकग्राउंड में कुछ तो कर रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव योर फुल अटेंशन। सुबह का टाइम होता है और आपके दिमाग में कुछ नहीं रहना चाहिए। आप सुबह सुबह उठते हो, आपको सेशन ज्वाइन करना है विथ योर फ्री माइंड एंड फुल अटेंशन ओनली टुवर्ड्स द सेशन। सारे इंस्ट्रक्शन जो दी जाएंगी वो फॉलो करनी है अप टू द टी। आस्क एनी क्वेश्चंस एनी टाइम। अगर आपको कितना भी डम क्वेश्चन लगे तो भी यू विल नेवर बी रिडिक्यूल्ड। ऑलराइट। बिकॉज जो आपको सवाल है इट इज वेरी मच पॉसिबल सेम क्वेश्चन दूसरों को भी है। सो I want everyone to ask as many questions as possible and be it as dumb as you think, but I want the questions to be out of your mind. उसी सेशन में आपको उस सेशन में क्वेश्चन है तो उसी सेशन में ही पूछने। रुकना नहीं है कि चलो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेता हूँ, अभी टाइम नहीं है, ये सब नहीं। ठीक है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्टली, your teacher, and also others in the class. There'll be no discussion on politics. There'll be no discussion about uh, opinions. There'll be no discussion about uh, anything controversial.
ठीक है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट अदर्स इन द क्लास। सेशन के पहले डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने, कोई भी फोन साइड में रख दिया, फोन फिर इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, बीच में सेशन चल रहा है, ये सब नहीं करना है। टाइम पे आना है, और अपने कैमरास आपको जितना हो सके ऑन रखना है सेशन के वक्त। ठीक है, फर्स्ट फ्यू सेशंस इट्स फाइन, बट नेक्स्ट सेशन से आई वुड लाइक टू सी योर कैमरास ऑन। खाना नहीं खाना है सेशंस के वक्त, इफ यू कैन ड्रिंक वाटर, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस। फाइनली, अगेन, चीट नहीं करना है किसी भी असाइनमेंट में, किसी भी प्रोजेक्ट में। ओके, so these are the expectations from students, and अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक्सपेक्टेशंस फॉलो की है, और जिन्होंने फॉलो की है उनका अच्छा ही हुआ है। ठीक है, अगेन, रिकॉर्डिंग्स आर आल्सो नॉट अलाउड, आप किसी भी सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। दीज आर ऑल प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन विच कैनॉट बी शेयर्ड विद एनीवन हु इज आउटसाइड द कोर्स। ठीक है, सो डोंट थिंक दैट कि आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे या फिर रिकॉर्डिंग्स कर लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ एनीवन रिकॉर्डिंग। Okay, so these are the expectations from students. All right, just the way you have expectation from course, we also have expectation from our students. All right, so that's it. I think I just wanted to have these questions. और अभी भी कोई भी सवाल होगा आपको प्लान के बारे में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीधा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो आई वांट यू ऑल टू थिंक अगेन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Obviously you'll know how I teach and how I take the sessions. हम लोग टॉपिक से ही शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन, विच इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे, राइट? थर्सडे को हमारा रहेगा सेशन। यस प्रेरणा। Yes, sir. So, actually, how many calls you provide? Uh, Interview calls. I think Prerna, that's a good question for Ashish sir, because he will be able to help you there. I can help you with all the topics related to data science and the course, but the topics such as interviews, calls, or CVs, Ashish sir is the right person to answer those questions. But yeah, thanks for asking that. I'll make sure that he gets your question too. Okay, okay. And sir, can you please tell me you provide PDF, Yes. topic So PDF? yeah. So all the presentations, उनका PDF आपके साथ में share किया जाएगा. You'll have the presentations, PDFs. You'll have PDFs for the readings. Anytime that you see, you'll have PDF for the textbooks. So you'll have a lot of reading material. You will be never short of reading material that I share with you. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Yogita? Hello, sir. So actually, how many vacancies for that data scientist in one company? Hello. Yes. Yes, Yogita. So Yes, sir. in a company, vacancies for data science depends on the company itself. For example, if you see a company like Netflix, you'll have thousands of data science working. But if you see a company which is in a maybe manufacturing domain, such as maybe Tech Mahindra, I'm not Tech Mahindra, it could be a bad example. Maybe some manufacturing companies. I don't know names of good manufacturing companies, but think of any petroleum company, or think of any company where they make uh, some kind of devices or some kind of material, cement material, Ajanta and all, right? So those company will have small data science teams, right? So vacancy depends on company कौन सी है, but on an average अगर आप tech में देखते हो तो you'll be having a handful number of people working on data science. When I say handful, it's not a small number. It's not. I mean, it's not as big as the जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिर उसके बाद में डेटा इंजीनियर्स, ये सब कुछ ऐड करके उनका सम करके जब आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली नॉट, you'll see that डेटा साइंटिस्ट कम होते हैं, बिकॉज वो सब रिसर्च का काम होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम में इट्स मोर ऑफ वर्क, कि आपको एक
लिस्ट ऑफ थिंग्स दे दिया एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. बट डेटा साइंस का वैसे नहीं होता. यू विल बी आस्क्ड questions which are not easy to answer. Okay, so डेफिनेटली वैसे लोग कम होते हैं क्योंकि स्किल्स भी मुश्किल होते हैं वो गेन करना. सो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी रोल्स होते हैं वो. अगर आपका कोई कंपनी ऐसा होगा कंसल्टिंग कंपनी वगैरह वहां पे ज्यादा होते हैं. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी. आई या दैट्स व्हाट आई वुड से. कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितने कितने एज रोल्स के कम्पेयर आपके. टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज्यादा होते हैं वैकेंसीज या फिर डेटा साइंटिस्ट की ज्यादा ज्यादा होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं आई वुड से because in these days everyone wants to have a data science team. ओह, ठीक, थैंक यू सर। Yeah, I see someone's hand raised. Niharika, yes. Yeah, so two things. Firstly, could you please share the link of the textbook, which is the e-textbook, which you just mentioned over the PPT? Yeah, that one. Firstly, secondly, I was hoping, so since we have good number of days within sessions, you could provide us a topic so that the a team, so that the class can come prepared beforehand. Since we have our next session on Thursday, could you please share the topic so that we can just study it by ourselves and we are well versed with what we are supposed to study? Sure thing. So for coming session, I'll post it on the Telegram channel, and for the consecutive sessions that we have after that, I'll be having you all on the Discord channel where I'll be sharing all the topics. Okay, and the links that I say here, this will be only shared in a closed group. I cannot share them publicly because these are not free textbooks, so I cannot share them publicly. Okay? But I'll be sharing them in a closed group, like I said again. Once you are in that particular closed group, I can share it with you. Yes, sir. Yeah. And for the next session, I think you can come out blank. It's fine because it's a first session. I don't expect you all to come read something, but I want you all to have a clear mind that you don't have any doubts about the course, and even if you have any doubts, you can ask those in the next session. But we'll be starting with the topics in the next session. Yes, Pranav and Shiv. Yeah, Hello, hello, good sir. morning, sir. Hi. Yeah, Pranav, go ahead. Sir, what are the chances of getting placed as a fresher and having gap of 3 to 4 years? So chances are high, I would say, but again, like I said, all the questions related to uh, interviews, CVs. I take the mock interviews, but I cannot take the question about what are the chances, how to prepare the interviews, how to prepare the CV, and all that questions. That's a Ashish sir question, I would say. Okay, sir, Right. thank you. But as far as I know, there are very high chances, very good chances because uh, I see many openings these days for data scientists, for data analyst, business analyst, data engineering. So these are pretty wide range of roles that you see here. It's not just you'll be applying for only one role, but you'll be applying for all these roles. So it's a pretty wide net that you're going to create for yourself to get placed. Okay, sir, thank you. Yes, yes, Pranav. Hello, sir. Yes, Shiv Prasad. Actually, we need to install PyCharm, right? Yes, you need to install PyCharms, but not on the first day. I'll be having some things shared where you will be doing things on browser. So I have some links in mind that can help you do the interactive coding there. But we'll install PyCharm in next few weeks, not directly on the first day, right? But if Yeah. you have it installed, it's fine. You'll need PyCharm Community Edition if you're going to install it. Okay, okay. Yeah, that was my question. And Yeah, thank you. yeah, PyCharm Community Edition, install it. Even if you don't install it, I'll also be explaining how to install it, how to set it up, and how to set up your virtual environments, how to set up your Python. I'll be taking a session on that. Yeah, okay. Yeah. Thank you. Yes. Yes, Pranav. You have another question? Sorry, sir. Okay.
Other questions? Yes, Akshay. Sir, as you have worked in the machine learning, so what is the role in machine learning and where we have to focus? So for machine learning, you need to have a very good hold on your programming skills as well as your data science theory or data science modeling things, right? So experience in coding is a must. In fact, you have to be Okay. pretty good programmer. In addition to Yes. that, you also have to understand the data science. You have to understand the statistics or Okay. so these are some things which are important as a machine learning engineer. अभी Okay. मशीन लर्निंग इंजीनियर का कैसे है, हर कंपनी में अलग अलग तरह का काम होता है. कुछ कंपनीज में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का काम होता है कि डेटा साइंटिस्ट ने बनाया हुआ मॉडल आपको फिर से कोड करके डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में. कुछ कुछ कंपनीज में एक मॉडल तैयार होता है, आपको प्रोडक्शन में डालना है. ओके, प्रोडक्शन में Okay. क्रिएट करना मतलब लाइव सिस्टम पे डिप्लॉय करना. करेक्ट. आप ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप जब कोई डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट कोई एनालिसिस करके रखता है, इट हैपेंस इन अ पर्टिकुलर क्लोज एनवायरनमेंट. बट मशीन लर्निंग इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसको रियल टाइम प्रोडक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है उस पे उनका ज्यादा फोकस रहता है. तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, थोड़ा थोड़ा डेटा साइंस होता है, प्रोग्रामिंग स्किल्स जैसे कि मैंने बोला था बहुत ज्यादा लगते हैं. बट अगेन इट्स नॉट समथिंग Okay. विच इज नॉट अचीवेबल. इट कैन बी डन. और हर कंपनी में अलग अलग तरह का रिक्वायरमेंट होता है उसका. अगेन Okay, sir. इट्स नॉट सेम फॉर ऑल द कंपनीज. Okay. Thank you, sir. यस. मोर क्वेश्चंस? यस प्रमोद. प्रमोद, you have a question? Sorry, sir. My sir, I have done bachelor's in agriculture. So Mhm. will it be difficult for me to learn Python and data science? So you did your bachelor's in agriculture. Yes, Uh, yes. so it will be difficult for first few months. After that, once you get a hold of it, you'll be able But to it do it. is doable. It's doable, but first few months it's going to be difficult. What Uh, extra effort I have to put in? Extra effort is if everyone who is in IT background has to study one particular topic once, you will have to study that topic 4 to 5 times just to get to Okay, that particular language. When I say language, ki when I talk about data science or when I talk about programming or Python, वो okay, language, although it's English or although it's Hindi and Marathi whenever we speak if required, that language itself has some jargon मतलब कुछ ऐसे words होते हैं जो specific to domain. For example, आप agriculture से हो, right? When you talk about agriculture, जब आप हिंदी में कुछ explain करते हैं तो उसमें आप कुछ ऐसे words यूज करते हैं agriculture related जो किसी common आदमी को समझ में नहीं आएंगे जब तक उन्होंने वो टॉपिक्स ठीक से पढ़े नहीं होते. उसी तरह से आपको भी कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे. एक I have to अगर sir. सब लोग अगर एक बार पढ़ रहे हो तो आपको मे बी 4 बार पढ़ना पड़ेगा उसको. लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स आप यू विल बी अप टू द स्पीड. आफ्टर 2 मंथ्स अगर सब लोग एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक ही बार पढ़ना है. तो Okay, sir. बट फर्स्ट 2-3 मंथ्स इट विल बी Yeah, अपहिल टास्क. yeah. यस, डेफिनेटली. Okay, sir. I'll work यस. hard. यस प्रमोद. Thank you. बट अगेन, so this actually brings us back to expectation from students, right? So if you're a good student, if you follow all the expectations properly, then definitely I'll be taking more efforts.
Yes. I see a student working hard. I tend to go an extra mile for that particular student. Okay. Thank you. Yeah. More questions? Yes, Rushika. Okay, myself, as I want to ask you, sir, as I'm coming from non-technical, so what is this future scope for this? What will be the highest paying job for us? So highest paying job is, like I said, it's a subjective answer, but we have placed people as high as 18 lakhs per annum. Okay, in this particular field. In fact, machine learning engineers or the data scientists can earn 25 to 30 lakhs per annum. Okay, on an average, this is what you can expect. The answers that I gave you, those are high end, but on an average, this is what you can expect. Entry level पे इतना 4.3, mid level पे 9, senior level पे 11. Okay, so these are the average numbers. But अगर आप extra hard काम करते हो, if you really do good in programming, if you understand all the topics properly, अगर आप सारे questions जो हम लोग आपको देते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के, अगर वो सारे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो then sky is the limit. Trust me, the sky is the limit for most of these jobs. These are the skills Even which if are, we are coming from, yes, even if even we if you're are coming coming from from non, non-technical, yes, even if you're coming from non-technical or technical, doesn't matter. It all that matter is कि आपके पास एक major project है बना हुआ, आपके पास skill set है या नहीं है. That is what is important. Do you know how to do it? Even if there's a person who has done his bachelor's in IT or computers, if he does not have the skills of being in the tech, then he's not going to be in the tech at all, right? So okay, it sir. all depends. Yeah, it all depends on how much hard you work, on how much dedicated you are towards the course, or how much dedicated you are towards, how much serious you are towards your own future. Okay, Yes. we'll do our best to make sure you understand each and everything, but you have to be uh, working extra hard. Yes, Rushika. More questions? So like I said, आज के सेशन में आपको जितने भी सवाल होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, आप पूछो. नेक्स्ट सेशन में विल हैव सम टाइम टू answer these questions, but we'll be starting with topics in the next session. So make sure you are asking all the questions you have. We'll be having a formal introduction, but that formal introduction of students will happen once we are done with the free sessions. That is when we know how many students are going to join, because it doesn't make sense for me to go through the introduction of everyone, and after that, if students are not joining, then we'll be, in fact, not spending good amount of class understanding each other, right? So it's better we have that introduction call after we have a closed group जहाँ पर we know these are the students, and that is when I will like to know exactly आपका background क्या है, आपका target क्या है, आप का एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीजें आपको एक डॉक्यूमेंट में लिख के आपको मुझे सेंड करना है, so that I have that, and we'll use that for various things. That all of that comes once we have a closed group created. Okay, sir. Yeah. All right. So let me just take last 2 or 3 questions, and after that, I'll see you all on Thursday. Okay. So now is your time to ask questions. Maybe just last 2, 3 questions. Unless you don't have any questions, I'll see you all on Thursday.
So let me know. All right. So I think no questions. Again, just to repeat, these are the free sessions. You are free to include or call your friends and family for this session or colleagues so that they can also benefit. The reason I say that is when learning happens with a group of students, in fact, if there's someone with whom you meet regularly, it can be beneficial for both of you. And the way we teach the course, the students that are going to be in the course are not your competitors, but your competitors are who are outside the course, right? So inside the course, everyone is a friend. You have to learn collaboratively and help each other. Okay? So that is a kind of environment we try to create for our courses. Yes, sir. All right. Yeah. Okay. So I'll stop sharing and just stop the recording too.